next part is graphical representation. See, graphical representation is based on the equation of SHM. For that, you have to understand some of the basics of the SHM. That is, this is the mean position, this is right extreme, this is left extreme, and here the displacement is maximum, that is amplitude plus a. This is having amplitude of minus a. When the particle starts motion from mean position, initial the phase is of 0. When it goes to right extreme, it has phase of pi by 2. Pi by 2, another pi by 2, that is coming as 3 pi by 2, and it comes as 2 pi. This is how there is change in the phase from extreme to mean position and mean position to extreme position. Now the equation of SHM in general is given as x is equal to a sine of omega t plus alpha, where alpha represents the initial phase. Initial phase means from where the particle starts its oscillation. It may start from mean position, it may start from right extreme, it may start from left extreme, depending upon the situation. And according to that, we have to select the value of alpha. See, from mean position, if we start the motion, when we start from mean position, then in that case, alpha should be equal to as 0. Alpha number 0. Now, alpha का 0 consider करते हैं, तो your expression for displacement comes as x is equal to a sine of omega t बचेगा, alpha नहीं रहेगा. For velocity, we have to differentiate this. This will be given as dx by dt, and dx by dt means it is d by dt of a sine omega t, where a is a constant. That means your expression for velocity a into derivative of sine will become as cos of omega t, and derivative of omega t will come as omega. That means the expression for velocity comes as a omega cos of omega t. Then acceleration की बात करेंगे. Acceleration is given as dv by dt. Once again dv इसी होगा d by dt of a omega cos of omega t. Now a omega cos of omega t means a omega constant, derivative of cos is minus sine, that is minus sine omega t, and derivative of omega t once again omega, just like in the previous case. जैसे पहले किया था वैसे का भी सी रहेगा. That is in all, the expression of a comes as minus a omega square sine omega t, omega के साथ कैंसिल. So we have got the expression for displacement, for velocity, and for acceleration. Now we have got out the possibilities of the values for displacement, velocity, and acceleration. For condition क्या दिया इसके अंदर? Condition ये, if you start from mean position, your initial time will be t is equal to 0. लेकिन यहाँ से अगर राइट एक्सट्रीम जाता है तो इट कवर्स 1/4 ऑफ द पीरियोडिक टाइम, दैट इज t by 4. और अगर वापस मीन पोजीशन पे आएगा तो t is equal to t by 4 plus t by 4, that comes as t by 2. यहाँ से इधर जाएगा, that is t is equal to 3t by 4, and from 3t by 4 it comes as t is equal to capital. So oscillation भी कंप्लीट तभी होता है जब मीन से राइट एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू लेफ्ट एक्सट्रीम टू अगेन मीन, that comes as pperiodic time as t. Now fill the table. Now to fill this table, first variable is t, next one is omega t. T का वैल्यू 0 होगा. Then you can say that it is t by 4. The next one is given as t by 2. The next one is 3t by 4. Further it is given as t. फिर ओमेगा t का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा t, if you want to calculate omega t, omega is given as 2 pi by capital T into small t. Now for first case, अगर पहले केस के लिए कंसीडर किया t is equal to 0, उसमें सब्स्टिट्यूट किया तो 2 pi by t into 0 will be 0. For second case, when t by 4 is considered, तो ये 2 pi by t है into small t is given as t by 4, जिसमें से t cancel, 2 cancel, that means this will come as pi by 2. Similarly, t by 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, that will come as pi, this will come as 3 pi by 2, and this will come as 2 pi. जैसे जैसे उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करके वैल्यू आते हैं. Then on the basis of that we can calculate displacement
velocity and acceleration. Now the expression for displacement here is x is equal to a sin omega t. For velocity it is v is equal to a omega cos of omega t. And for acceleration a is equal to minus a omega square sin of omega t. According to that we calculate the value. अगर ओमेगा टी 0 तो sin 0 is 0 मतलब x is equal to 0. pi by 2 डालेंगे sin pi by 2 is 1. 1 into a will become as a. pi सब्स्टिट्यूट करें sin pi is 0. a into 0 will become as 0. 3 pi by 2 अगर डालेंगे तो sin 3 pi by 2 is minus 1. Minus 1 into a will become as minus a. And 2 pi will become as 0. और alternately हर 90 डिग्री में वैल्यू फ्लक्चुएट होगा 0 to a to 0, 0 to minus a, 0 फिर a फिर 0 फिर minus a and so on. For every 90 degree the value will fluctuate between a and minus a. Velocity की बात अगर कंसीडर करेंगे omega t is considered as 0. When omega t is considered as 0, cos 0 will become as 1. So 1 into a omega, this will be a omega. Pi by 2, cos pi by 2 is 0. Pi, cos pi is minus 1 into a omega is minus a omega. 3 pi by 2, cos of 3 pi by 2 is 0. 2 pi, cos 2 pi is 1 into a omega, that will come as a omega. Next, for acceleration x a is equal to minus a omega square sin omega t. Now if you see here omega t is 0, that means it will come as 0. Pi by 2 डालेंगे sin pi by 2 is 1. 1 into minus a omega square will come as minus a omega square. Pi अगर कंसीडर करेंगे तो sin pi is given as 0. 3 pi by 2 sin 3 pi by 2 is minus 1. Minus 1 into minus a omega square, that will come as a omega square. 2 pi will come as 0. This is how the value fluctuates. और इसी को अपने को टेबुलर फॉर्म से लेके ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे. अभी ग्राफ कैसे होगा? वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑन द सेम टाइमलाइन. एक ही टाइमलाइन पे कंसीडर करनी है फॉर डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेलोसिटी एंड फॉर एक्सेलरेशन. दैट इज यहां पर उसका वैल्यूज this is how will change. This will be given as pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, 5 pi by 2 and so on. And this represents the physical quantity as omega t. कुछ बुक्स में यहाँ पर t represent करते हैं तो चलेगा वही चलेगा, लेकिन अगर t represent किया तो instead of this values will consider 0, t by 4, t by 2, 3 t by 4 t करके भी कंसीडर कर सकते हैं. दोनों भी चलेगा, ओमेगा t और t, दो में से कोई एक कंसीडर करने का. So everywhere we will consider same omega t for all the three physical quantities, whether it is the case of displacement, whether it is the case of velocity, or whether it is the case of acceleration. Then what are the maximum and minimum value for displacement? Now if you see here, the maximum and minimum value for displacement is plus a and minus a. So plus a उसका maximum displacement है और minus a उसका minimum displacement. दोनों इक्वल इंटरवल पर है. For velocity, plus a omega is maximum value and minus a omega is minimum value. Then for acceleration, plus a omega square and minus a omega square. बस ये ध्यान में रखना है, ये दोनों का विड्थ सेम रखना चाहिए, ये दोनों, लेकिन इसका और इसका अलग हो सकता है बिकॉज क्वांटिटी अलग है. वो प्लस है, दिस इज प्लस ए ओमेगा, दिस इज प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये चीज, बट ये दोनों का सेम होना चाहिए, ये दोनों का सेम, ये दोनों का सेम. देन वी हैव द गाइडलाइंस. गाइडलाइंस कंसीडर करेंगे इसके अंदर. प्लस ए का गाइडलाइन इस तरह से प्रोसीड होगा. यू विल ड्रॉ विद द यूज ऑफ स्केल, तो प्रॉपर्ली ड्रॉ होगा. प्लस ए ओमेगा, दिस विल बी द गाइडलाइन. माइनस ए ओमेगा, दिस विल बी द गाइडलाइन. एंड this is plus a omega square, this is minus a omega square. The next pi by 2 अगर कंसीडर करेंगे तो इस तरह से आएगा. This is pi by 2, this is for pi and this is for 3 pi by 2. फिर 2 pi के लिए कंसीडर होगा. And then for 5 pi by 2 we have another parallel. So these are the guidelines. Now in case of displacement, when angle was 0, displacement is also 0. तो यहाँ पर 0 ही कंसीडर होगा.
For pi by 2 displacement is plus a, ये पॉइंट यहाँ पर कंसीडर हुआ. For pi it is again 0. For 3 pi by 2 it is minus a, that means point will be here. For 2 pi it is again 0, that means your graph will look like this. और ये साइनोसॉइडल वेव इस तरह से बनाने हैं. The wave will continue. For velocity, this is plus a omega at angle 0. Then for pi by 2, it is coming as 0. For pi, it comes as minus a omega. For 3 pi by 2, it is again 0. For 2 pi, it is coming as plus a omega and again 0. That means the waveform goes like this way. For acceleration, when angle is 0, the value is 0. When angle is pi by 2, the value is minus a omega square. When pi, it is 0. When 3 pi by 2, it is plus a omega square. 2 pi, it is again 0. और फिर minus करेगा. That means the value will fluctuate like this way. These are the waveforms of displacement, velocity and acceleration. अभी अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी इतना पार्ट वेलोसिटी में पहले से खत्म हो चुका है, मतलब स्टार्टिंग टू द मैक्सिमम वैल्यू. दैट मींस देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ पाई बाय 2. पाई बाय 2 से उसके अंदर फेज डिफरेंस आएगा. फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में देखें तो इतना पार्ट इसमें ऑलरेडी कवर हो चुका है. दैट मींस इसका भी फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का रहेगा. यानी कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस पाई का आना चाहिए उसमें. ऐसा ही ग्राफ फिर एक्सट्रीम पोजीशन के लिए भी होगा. एक्सट्रीम पोजीशन के लिए फर्क क्या होगा? इफ यू कंसीडर फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पर एक ही अपने पास पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन कंसीडर करते हैं. वी डोंट कंसीडर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन. अपने सिलेबस में उतना ही नहीं करते. तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन दैट मींस एंगल विल बी कंसीडर्ड एज पाई बाय 2. दैट मींस अल्फा विल बी पाई बाय 2. और अगर अल्फा पाई बाय 2 होगा तो x विल बी इक्वल टू a sin of ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 होगा. And because of that, your displacement will be x is equal to a cos of omega. यहाँ पर a sin omega t, इधर a cos omega. फिर ऐसे velocity consider करेंगे, this will come as minus a omega sin omega t. This derivative को इसी कैलकुलेट कर रहे हैं. For acceleration, it will be coming as minus a omega square cos of omega t. फिर वैसे टेबल वाला ये कैलकुलेशन करना है. इसमें अगर ग्राफ अगर देखेंगे तो for particle starting from extreme position, your graph will start from this position. वो यहाँ से शुरू होगा. तो इस बुक में देखिएगा. बस यहाँ पर ये एंगल जो हो जाएगा 0. This angle will be considered as pi by 2. This will come as pi. This will become as 3 pi by 2. This will come as 2 pi. So बाकी पूरा का पूरा ग्राफ इसी का वैसे है. This is how the graphical representation has to be done. Now next, we'll see the energy of the particle performing simple harmonic motion. Energy of particle performing SHM. एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, एनर्जी दो तरह का होता है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों रहेगा. When we talk about kinetic energy, so the formula for kinetic energy is half mv square. और अगर v का वैल्यू अगर आपको याद होगा तो हमने डिराइव किया था प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. If you substitute back here, this will become as kinetic energy will be equal to half of m into, इसको स्क्वायर कर करेंगे, this will become as ओमेगा स्क्वायर into a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर. ऐसे और एक एक्सप्रेशन हमने देखा था k by m was considered as ओमेगा स्क्वायर.
दैट मींस k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। ना लगे फॉर्म में लिखने का, तो k की जगह अगर m ओमेगा स्क्वायर है तो इसका मतलब है दिस इज हाफ ऑफ k into a square minus h square। ये भी एक्सप्रेशन है, दिस इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक। बट अपने पास और एक एक्सप्रेशन है, that is I know that in general the expression for displacement is x is equal to a sin of omega t plus alpha। तो अगर वेलोसिटी इससे निकालना हो तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, उसका डेरिवेटिव लेंगे a into डेरिवेटिव sin is cos omega t plus alpha into derivative of omega t plus alpha will come as omega, that means v is equal to a omega cos of omega t plus alpha। This is only for your understanding, यहाँ पे डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, this is not part of the derivation। बस इसको उठा के जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी will come as half m into v square के जगह पे लेंगे, this will come as a square omega square cos square omega t plus alpha, जिसमें से मास ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड इज फिक्स, मैक्सिमम उतना ही रहेगा और ओमेगा इज कांस्टेंट। मतलब अगर इसको देखा जाए तो आई कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी वेरीज एज द फंक्शन ऑफ cos square theta, वो cos square पे डिपेंडेंट है काइनेटिक एनर्जी। सेम वे वी कैन क्वेश्चन विद द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैसा है, दिस इज द पाथ ऑफ योर एसएचएम, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, दिस इज राइट एक्सट्रीम एंड दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम। Suppose the particle is considered somewhere here, ठीक हमने यहाँ पर कंसीडर किया at point A, which is at displacement of x from the mean position। अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से यहाँ उसने कवर किया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx is considered। So what happens, the small amount of work done for small amount of displacement is f into dx। But here when we consider displacement in this direction, your force is acting in opposite direction। इसका मतलब है f into dx से लेंगे तो माइनस होगा। When force and displacement are in opposite direction, इसका मतलब है it is an example of negative momentum। That is equal to minus f की जगह पे क्या वैल्यू होगा? Now f is equal to minus k। This is what the very beginning of the expression। This is coming as minus kx into dx। That means your dw comes as kx dx। ओके, अगर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे दैट विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब इंटीग्रेट करना होगा, एडिशन, समेशन, समेशन मींस इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रल ऑफ kx dx। कहां से इंटीग्रेट करना है, फ्रॉम 0 to x, एंड व्हेन वी इंटीग्रेट k इज आउटसाइड द इंटीग्रल साइन एज फोर्स कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ x विल बी गिवन एज x स्क्वायर बाय 2, और उसकी लिमिट यहाँ पर दिया गया है 0 to x। और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली दिस पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन कम्स एज k into x square by 2, और ऐसा बोल सकते हैं कि इस हाफ k x square, जो कि इसके साथ मैच हो रहा है। बट यहाँ पर k की जगह पे m ओमेगा स्क्वायर का डालेंगे, दिस विल बी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर भी आएगा। एंड इफ इन प्लेस ऑफ x if you take this a sin omega t plus alpha, then expression for potential energy will be equal to half of m omega square into square of x, means it will be a square sin square of omega t plus alpha। So once again this for potential energy can say that it varies with sin square theta। ये MCQ में क्वेश्चन बन सकता है, kinetic energy varies with cos square theta and potential energy varies with sin square theta। Then we can have the expression for total energy। total energy की अगर बात करेंगे तो total energy will be given as kinetic energy plus potential energy। kinetic energy is given to you as half k into a square minus x square। potential energy is given to you as half k x square। You have got this expression, that means half of k is taken common, this comes as a square minus x square plus x square, plus x square minus x square cancel, that comes as half of k into a square। This is the expression for total energy। As a whole we can say that amplitude is constant, k is constant, total energy is constant, but we say that total energy depends upon few quantities। कौन से quantities है? half of k can be given as m omega square into a square, जिसमें से हाफ ऑफ में ऐसे रहेगा ओमेगा इज गिवन एज 2 पाई बाय t और
we can say that is 2 pi f linear frequency. और सिंप्लीफाई करने के बाद दिस इज हाफ ऑफ m into 4 pi square f square a square. 2 और 4 कैंसिल हो गया, दैट कम्स एज 2 pi square m f square a square. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, जिसमें से 2 और pi square कांस्टेंट है. तो वेरी किस पे हो रहा है? डिपेंड्स अपॉन मास, डिपेंड्स अपॉन लीनियर फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड. So we can say that total energy is proportional to mass of the body. Total energy is also proportional to square of the linear frequency. Total energy is also proportional to square of the amplitude. तो ये एक्सप्रेशन एग्जाम में आ सकता है कि show that total energy is proportional to mass, linear frequency and amplitude. Then as far as total energy is concerned, that remains constant at every instant. At every instant in the sense, suppose at mean position we consider. At mean position x will be equal to 0. So therefore the potential energy formula is half k x square. This formula हमने देखा. Our x का value 0 लिया तो this will be half of k into 0 which comes as 0. Kinetic energy of the expression comes as half k into a square minus 0 square. That comes as half k a square. So what about total energy? Total energy sum of this, और दोनों का आइडिया क्या है? half k a square. ये एक्सप्रेशन. At extreme position or positive extreme position, that is right extreme position. At positive extreme position we consider, then x is equal to plus a. और अगर सिर्फ एक्सट्रीम लिखा तो इसका मतलब x is equal to plus और माइनस दोनों है. Using this expression, what about the potential energy? Potential energy is half of k into x square. X square का मतलब plus or minus a whole square. That comes as half k a square. Kinetic energy, it is half of k into a square minus x square. Now a square minus x square means again a square, that comes as 0. और इन दोनों का भी सम लेंगे तो टोटल एनर्जी फिर से वापस half k a square है. इसका मतलब टोटल एनर्जी हर हालत में कांस्टेंट है. किसी भी पोजीशन पे अगर टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. And the graph is given like this way. यहाँ पर E is equal to हमने 0 कंसीडर किया, and this is the value where energy is equal to half k a square, or which is half of m omega square a square करके कंसीडर. And this is the mean position x is equal to 0. Right extreme x is equal to plus a, and left extreme this is x is equal to minus a. The guideline is considered for x is equal to plus a. The guideline is considered for x is equal to minus a. At mean position, what happens? Your potential energy is 0. But at extreme position, the potential energy is plus k square. मतलब x is equal to a, potential energy is maximum, potential is minimum. That means the curve of potential energy is like this. Next, kinetic energy की बात करेंगे. At mean position, kinetic energy is maximum, and at extreme position, kinetic energy is 0. So this is the graph of kinetic energy. This is the expression for kinetic energy, and this is the expression for potential energy. एक पॉइंट है जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, दैट मींस दोनों इक्वल है. और इक्वल कब होते हैं? जब kinetic energy और potential energy सेम हो. kinetic energy potential energy सेम होगा, इसका मतलब half k a square minus x square is equal to half k x square. Half k cancel, that is x square minus x square minus x square will be equal to x square. That is 2x square is equal to a square. Or we can say that x square is equal to a square by 2, or x is equal to plus or minus a upon root 2 करके एक्सप्रेशन है. इसका मतलब this is the point where x is equal to a upon root 2, and this is the point where x is equal to minus a upon root 2. This is the energy of the particle performing simple harmonic motion. I hope so. The concept is clear. Now we'll proceed with the simple pendulum, oscillation of the simple pendulum here, and we will derive the expression for the periodic time of simple pendulum.
What is simple pendulum? Simple pendulum is nothing but a heavy ball or heavy mass attached with the light inextensible massless spring attached to the rigid support and freely suspended in air. मतलब एक rigid support consider किया and to which heavy ball is attached and this oscillates. तो ये oscillate करके इस तरह भी आएगा. This is the ball oscillate करके इधर भी जा सकता है and this is how the motion is performed. Now length of the spring is given as L and radius of the bob is given as small r. So length of the simple pendulum is given as L plus r. When bob is considered, bob is attached because of the tension attached to the spring. But इसके ऊपर एक force act होता है that is always in vertical downward, that is called as mg. Then this mg is resolved into two components, one along the spring and another perpendicular to that. बस ये ड्रॉ करते समय इस बात का ध्यान रखने के it should form as a rectangular components. ये काटा पड़ा नहीं मिलाने ये perfect vertical होगा और ये इसके साथ स्ट्रिंग के डायरेक्शन उससे परपेंडिकुलर होगा. If at the rigid support this is making angle theta, this will be also theta. और अगर ये mg रहेगा तो this component will be given as mg cos theta and this component will be given as mg sin theta. Now when displacement is towards right side, the force will be towards left side. इसका मतलब F will be equal to minus mg sin theta का expression आएगा. Now this oscillation of simple pendulum is applicable for smaller oscillations. Smaller oscillation मतलब smaller angle at the rigid support. And for smaller angle sin theta will be nearly equal to theta. That means F is equal to minus mg theta करके consider. But this is the example of a circular arc. Circular arc में condition होता है अगर ये angle theta है, this is the radius, then length of arc S will be equal to r into theta. इसका मतलब है यहाँ पर भी condition आता है length of the arc is given as x, radius is given to you as length of the simple pendulum, that is capital L, into angle form that is given as theta. इसका मतलब theta is equal to x upon L. So F is equal to minus mg, theta is given as x upon L. Force is given as mass into acceleration, which is equal to minus mg x upon L. Mm cancel, that is acceleration is equal to minus g upon L into x. That means this shows that acceleration is proportional to minus x. ये पहले पे मिलती रहेगी. ये एक्सप्रेशन आ गया. अच्छा, इस एक्सप्रेशन से क्या होगा? We'll have a upon x is equal to minus g upon L. यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर किया तो mod of a upon x will be mod of minus g upon L and that is g upon L करके कंसीडर. ऐसा क्यों? Because periodic time का फॉर्मूला है 2 pi by omega, जिसमें यहाँ पर आता है 2 pi by in square root we consider displacement or sorry acceleration per unit displacement. This is one of the formula for angular velocity. So 2 pi upon under root of this is acceleration a upon displacement is x, that is 2 pi under root of this is g upon L, that means E is equal to 2 pi under root of L by g principle. This is the expression for periodic time. Then we have laws of the simple pendulum. पहला law of length है where T is proportional to square root of length. Second one is T is proportional to 1 upon the root of g because 2 and pi are constant. And third one is T is independent of mass. बॉब का मास कितना भी कंसिडर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट टाइम में. And T is independent of amplitude also. This is called as law of isochronous. This is the expression of the simple pendulum. So due to time restriction, I am completing this topic here only. Best of luck for your exams.